So if you see, let me what is a mega bead? मेगा बीट क्या है बेटा? मेगा बीट्स आर मैग्नेटिक बीट्स, ठीक है, जिसको हम पैरामैग्नेटिक बीट बोलते हैं। सीक्वेंसिंग में याद रखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, इल्यूमिना हो, 454 हो, आयन टोरेंट हो, most of them they do involve during the purification or library preparation step. Almost all the sequencing techniques they involve, remember the magnetic bead selection of the DNA molecules, ठीक है, ये वाला नहीं, but in general. So ये जो paramagnetic beads, as the name suggests, these are the magnetic beads, and on the magnetic beads, these yellow color structures, these are oligo-DT. That means these are the long T न्यूक्लियोटाइड चेन्स। ये लॉन्ग टी न्यूक्लियोटाइड चेन्स क्यों है? सिंपल सी बात है, ये इसलिए है सो दैट इनके कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ग ए वाली चेन्स जो है वो अटैच हो सके। ओके, सी ठीक है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर में थोड़े टाइम पहले ही ये बताया था, मैंने आपको बेटा ये बताया था कि स्टेप्टाविडिन और बायोटिन बाइंडिंग में मैंने आपको आयन टोरेंट में भी बताया था कि हमने, जब हम लाइब्रेरी प्रिपरेशन करते हैं, तो जब लाइब्रेरी प्रिपरेशन खत्म होता है उसके बाद हमारा जो एक मोटिव होता है दैट इज टू डू द एनरिचमेंट प्रोसेस, ठीक है, हमने एनरिच करना है लाइब्रेरी को। व्हाई डू वी वांट टू एनरिच द लाइब्रेरी? वी वांट टू enrich the library because so that we get only those molecules जहां पर adapter ligate हो गया है, primer bind हो गया है, DNA polymerase bind हो गया है। We do not want to have those DNA molecules which are left as such, so we want to exclude them. We do not want to have molecules which do not have primer attached to them. So that is why, so that is called as enrichment. तो यहाँ पर भी in PacBio sequencing, once the library has been prepared, actually what we do is that we perform the function of enrichment. Okay, so in the enrichment, all those library fragments which are having the adapter and the poly A tails, they are selected. How are they selected? कि ये देखो, ये streptavidin या magnetic, not streptavidin, magnetic bead के साथ bind करते हैं। अब इसमें से आप देखो, this is regarded as a productive complex. Productive complex इसको इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारी possibility है, जैसे वहां possibility थी कि कितना डीएनए बाइंड करेगा बीड के साथ इन केस ऑफ आयन टोरेंट एंड 454। सो यहाँ पर भी बड़ी पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? ये भी पॉसिबिलिटी है कि अडेप्टर जो है, हमने जो सर्कुलर अडेप्टर लगाए थे वो आपस में ही बाइंड कर गए एंड देयर इज नो डीएनए इन बिटवीन। बट इवन इफ दैट इज द केस, इट विल स्टिल बाइंड टू द poly T which are attached to the biotin complex, to the magnetic bead, and there will be some insert which are, अगर हमने size selection proper नहीं किया library का, if we have not done the size selection of the library properly, then we would also have some of the library sequences which are very short, not of the desired length. However, this is what is required. Okay, so enrichment is done during this process with the help of the magnetic beads. ओके, अब क्या होता है बेटा, द नेक्स्ट पार्ट इज, अब लाइब्रेरी बन गई हमारी, लाइब्रेरी की एनरिचमेंट भी हो गई। अब द नेक्स्ट पार्ट इज दैट वी हैव टू make our library molecules go on to the sequencing platform. And what is the sequencing platform? In case of PacBio, the sequencing chambers कह लीजिए, the sequencing wells or holes in case of PacBio are the ZMVs, that is the zero wave, wavelength or wave guides। ठीक है, यही किया था हमने। तो with the help of these megabaits, let us see कि how the megabait is helping in loading the library molecules into the ZMV. So before sequencing, there will be a loading of the smart bell libraries into the ZMVs of the flow cell of the PacBio.
ठीक है। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार दिखा रही हूँ। इसमें क्या हो रहा है, अब देखो मैंने क्या कहा था, देर आर तीन चीजें हो रही है वहां पे। द थ्री थिंग्स दैट इज पॉसिबल इज दैट देयर कुड बी एन अडेप्टर डाइमर, अडेप्टर आपस में ही बाइंड हो गए। देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी हैव अ शॉर्ट इंसर्ट स्मार्ट बेल लाइब्रेरीज. However, we are interested in long length smart bell libraries only. Why we are interested in that? Because ये sequencing ही इस principle पे based है that we want to sequence long reads using the third generation smart sequencing approaches. So यहाँ पर what will happen is that as the magnetic bead will roll over the ZMVs, then the adapter dimers and the short insert smart bells. जैसे ये short insert smart bell है, this is not an adapter dimer, but ये short insert smart bell है. They will not be able to reach the bottom of the ZMV. Who will be able to reach the bottom of the ZMV, which is very long, and who is long? The ideal smart bell library is of the long size. So this is exactly what happens. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दैट जो प्रोडक्टिव हमारी स्मार्ट बेल लाइब्रेरी है, इट इज एबल टू reach the bottom. Once it reaches the bottom of the ZMV, it is bound to or it is fixed to that particular positions using the chemistry of the adapter. आप सोचिए अडेप्टर क्यों लगाते हैं? अडेप्टर इसलिए लगाते हैं वो नीचे जाके किसी के साथ बाइंड कर सके. अब वो किसके साथ बाइंड करेगा? The bottom of the ZMVs, they have sequences which are complementary to that of the adapter sequences, and as a result, what binds at the bottom? Only the productive libraries which have a length of adequate size, they will be able to reach the bottom and come in contact with the adapters, with the sequences or oligos complementary to the adapter sequences of the library. And once they reach the bottom, they will get fixed to the bottom of the ZMVs, that is the wave जीरो मैग्नीट्यूड वेवलेंथ. ठीक है, सो सॉरी ZMVs, दैट इज जीरो वेव गाइड्स. तो वहां पे जाके ये बाइंड कर जाएंगे. Okay, so that is the significance, and this is beautifully shown over here. This is what happens before the sequencing process, and I hope you have understood this part very nicely. Okay. Okay, now the second step is sequencing, and I'll take up in the next video the sequencing part, and I'll stop over